Good evening, friends. On a request from a lot of persons who are preparing for the judicial services, we had requested Dr. Deepa Singh to share her insights on Res Gestae versus Hearsay, understanding the difference between the two. As we all know that Dr. Deepa had also taught in the Punjab University, as well as she takes classes at a lot of places, and her sessions, even on Beyond Law CLC, are quite heartening and quite encouraging for the youngsters and all those who are interested with perspectives of law. I will not take much time, and I will straight away request her to give deep dive into the topic. Thank you, Vikas, for inviting me. And Evidence Act is मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैंने इसलिए एग्री भी कर दिया था. मैंने कहा ट्रायल कोर्ट्स में जो यंग लॉयर्स आ रहे हैं या हाई कोर्ट में अपील आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इससे एक इंसाइट डिफरेंट ही मिलेगी. अभी क्योंकि 1872 में ड्राफ्ट हुआ था इंडियन एविडेंस एक्ट, और जेम्स स्टीफेंस ने इसको ड्राफ्ट किया था. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, क्योंकि जब हम ये सब नए कानून लेके आए हैं, अब इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया, हमने बहुत सारे चेंजेस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किए और बहुत सारे चेंजेस हमने आईपीसी में किए, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें बहुत कम चेंजेस करने को मिले हैं, और जो किए भी हैं वो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल नहीं है. तो जो मेरा आज का लेक्चर है, दैट इज स्पेशली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम्स, और लॉयर्स वर्किंग इन द ट्रायल कोर्ट, और लॉयर्स आर्ग्यूइंग द सिंगल बेंच अपील और डबल बेंच अपील. क्योंकि कहते हैं ना कि एविडेंस एक्ट या कोई भी लॉ क्लास में और कोर्ट रूम में बहुत डिफरेंट होता है. तो जब भी हम कभी किसी लॉ को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए. तो एविडेंस एक्ट की खास बात क्या है और एक्ट से इतना डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम इसका सेक्शन 1 देखें, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, तो बहुत सारे सब लॉज में एक ही लाइन होती है, में एक्सटेंड टू इंडिया एटसेट्रा एटसेट्रा, बट इसमें स्पेसिफिकली एक लिखा है, it applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials, but not to affidavits presented to any court or officer, nor to proceedings before an arbitrator. So the slight change जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हुआ है, पहले कोर्ट मार्शल्स के बाद वो जो एक एक्सेप्शन थी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अलग होगा, लेकिन वो अब देखोगे आप इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को हटा दिया गया है. तो अब मेन हमें फोकस करना है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या है. तो अगर इसमें है जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर कोर्ट, ओके, तो अब लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट. अब सेक्शन 2 में कोर्ट की डेफिनेशन है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence. But आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट में ओथ भी दिलाई जाती है, और जब हम ये एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, ना सेक्शन 1 और ना सेक्शन 2 से क्लियर होता. इसके लिए हमें फर्दर बीएनएसएस में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की डेफिनेशन को देखना है, जो इसको और क्लैरिफाई कर देती है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग in the course of which evidence is or may be legally taken on oath. So the most important thing with regard to Indian Evidence Act या भारतीय साक्ष्य अधिनियम is that it applies only to judicial proceedings in or before the court where authorized magistrate are they are authorized to record evidence on oath. तो जब भी कभी हम जैसे पुलिस को या किसी और को भी लेक्चर देते हैं, तो उनसे यही पूछते हैं कि आप जो इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करते हो, वो सिर्फ स्टेटमेंट है, वो अभी गवाही नहीं बनी. तो ये इस लेक्चर में हमें यही समझना है कि जो पुलिस को दिए हुए बयान है, मैजिस्ट्रेट के सामने डाइंग डिक्लेरेशन है या कन्फेशन है या एडमिशन है या एफआईआर लिखवाई है या कोई साइट प्लान बनी है, कोई नक्शा बना है, कोई रिकवरी बनी है, कोई डिस्क्लोजर है, उस सब की एविडेंशियरी वैल्यू है क्या.
सो एविडेंस में हम ये अब समझ चुके हैं कि प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, बट अब थोड़ा सा मैं और क्लियर कर दूं यंगस्टर्स के लिए कि वो कह सकते हैं कि नहीं और जगह भी एविडेंस तो रिकॉर्ड होती है। तो डिस्टिंक्शन ये है कि और जगह एविडेंस रिकॉर्ड होती है, क्रॉस भी करते हैं हम, और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल नहीं होता। उसमें सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एप्लीकेबल होते हैं। कभी भी आप देखना, कंज्यूमर कोर्ट, आर्बिट्रेटर, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और जितने भी ट्राइब्यूनल हैं, कमीशंस हैं, और बहुत सारी, इवन रेवेन्यू कोर्ट्स हैं। सब जगह एविडेंस जरूर आप देते हो अपना केस को प्रूव करने के लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होते। मीनिंग देयर बाय जो चीज यहाँ पे रेलेवेंट है, एडमिसेबल है, वी आर जस्ट नॉट बाउंड बाय दोज रूल्स इन क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, राइट। सो अगेन इसकी कुछ एक और मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। जो ब्यूटी है वो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों पे एप्लीकेबल होगी। लेकिन मैं क्योंकि क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस ज्यादा करती हूँ, तो मैं जितने भी आपको एग्जाम्पल्स दूंगी या डिस्कशन होंगे वो मोस्टली क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड ही होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एविडेंस एक्ट जो है सिविल प्रोसीडिंग्स पे लागू नहीं होता। इट इज एप्लीकेबल ऑन सिविल केसेस ऑल्सो एंड criminal procedure code, everything, all the judicial proceedings. The catch is applies to all judicial proceedings, whether criminal or civil. अब जो है कोई भी एविडेंस या कोई भी अपने डिस्प्यूट को कोर्ट में लेके आता है, एक पार्टी असर्ट करती है, एक पार्टी डिनाई करती है, तो हर कोई अपने केस को प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस कोर्ट के सामने लेके आते हैं। तो अब कुछ उसके रूल्स होने चाहिए। रूल्स होंगे तो आप थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में एविडेंस रिकॉर्ड हो सकती है। उसको क्या रूल्स हैं? तो बेसिकली द होल एविडेंस एक्ट, इफ हम उसको सम अप करें तो 3 लेटर वर्ड्स में सम अप हो जाता है, RAW. So it revolves around only these 3 words. Raw. R stands for relevancy, A stands for admissibility, and W stands for competent witness. So there are certain rules and they're very strict. Strict rules means parties are bound by those, lawyers are bound by those rules, even judges are also bound by those rules. If something is relevant, something is admissible, and witness has been examined, then only those evidence can be given before the court. So what is relevancy, admissibility, that is also provided in the act. So the most important section of Evidence Act is Section 3 now, Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Earlier it used to be Section 5 of Indian Evidence Act. मैं इसको कहती हूँ कि ये बैकबोन है एविडेंस एक्ट की। इसको देखिएगा, इसमें सारा एविडेंस एक्ट एक तरह से समाया हुआ है। Evidence may be given of fact in issue and relevant fact in any suit or proceedings of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other fact as are hereinafter declared to be relevant and of no others. So we all know that जो भी हम एविडेंस कोर्ट में दे रहे हैं वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होनी चाहिए, रेलेवेंट फैक्ट से होनी चाहिए। बट 2 चीजें हम मिस करते हैं, वो इस सेक्शन को पढ़ के क्लियर होती है कि सच अदर फैक्ट्स एज आर hereinafter declared to be relevant. So कोई भी फैक्ट हम अपनी मन मर्जी से रेलेवेंट नहीं मान सकते, या इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस सेक्शन। और and of no others is also very, very important. So meaning thereby, whatever is declared relevant, whatever is declared admissible, वो ही कोर्ट के सामने हम एविडेंस दे सकते हैं, और कोई
चीज की एविडेंस नहीं दे सकते। तो जब आपने देखा होगा ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड एंड ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, तो वो इसी के रिगार्डिंग है, वो उसका बेस जो है वो सेक्शन 3 ही होता है। और कहाँ से है वो सेक्शन? अर्लियर सेक्शन 5 to 55 होता था रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी का, नाउ इट इज 4 to section 50. So whenever you're giving evidence, your evidence should fall either one of these sections. This is clear? So now, what is fact in issue and relevant fact? So we all know fact in issue in Criminal Procedure Code charges, and in CPC it is in civil cases it is framing of issues. We all know that these are the issues which require judicial investigation. So लेकिन अब उसके अलावा भी relevant facts 4 to 50 तक डिक्लेयर हो गए, बट उसमें बीच में कहीं जगह कह दिया कि ये फैक्ट एडमिसेबल नहीं हो गए। सो मैं कहती हूँ कि एविडेंस को देने के लिए कोर्ट में इट हैज टू पास थ्रू 3 फिल्टर्स। फर्स्ट, रेलेवेंसी 4 to 50 तक उसमें डिक्लेयर होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी एडमिसेबल ऑल्सो। दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट टेस्ट। सो are there any facts which may be relevant but not admissible? There are, like confession before a police officer is very, very relevant, but few sections completely prohibit that. No statement made to a police officer will be admissible. तो हम नहीं दे सकते उसको। अब जैसे न्यू एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे अब डॉक्यूमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस आने लगी है, बट एक पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया कि नो, दिस शैल बी एडमिसेबल provided conditions are satisfied. For example, जो 65B था वो अब 63 है। तो now digital and recording, digital and electronic evidence is also admissible. अब बात आती है कि क्या all the relevant evidence और admissible evidence को court consider करेगा? That is also depend upon the क्वालिटी ऑफ एविडेंस। जो भी रेलेवेंट आपने एविडेंस दी है कोर्ट के सामने, इसने पहला टेस्ट क्लियर कर लिया, रेलेवेंट भी डिक्लेयर होगी, एडमिसेबल भी होगी, बट अब हम उसको असाइन करते हैं वैल्यू। तो 3 कैटेगरीज है, सब्सटैंटिव वैल्यू, कंक्लूसिव और कोरॉबरेटिव। सो व्हाट इज सब्सटैंटिव एविडेंस? कितना वेटेज हम उसको अटैच करेंगे? सब्सटैंटिव एविडेंस में आ गया आपका डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, राइट? रेप केसेस में प्रोसिक्यूट्रिक्स की स्टेटमेंट हो गई अगर वो ट्रूथफुल है, राइट? अब कंक्लूसिव क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ जो 1-2 इसमें डिक्लेयर किए गए हैं एविडेंस एक्ट में, मींस के आपको कोई corroboration की रिक्वायरमेंट नहीं। एंड थर्ड कैटेगरी, स्लाइटली वीक, इज corroborative value. corroboration जो है वो उसके लिए वो यूज होती है। तो अब ओवरऑल कई बार हमें लगता है हमने तो बहुत अच्छी एविडेंस कोर्ट के सामने दी थी, ये भी दिया था, वो भी दिया था, सब कुछ प्रूव कर दिया, लेकिन कोर्ट ने तो कंसिडर नहीं किया, क्योंकि आपको पता है ट्रायल के एंड में एक्विटल भी होती है और कन्विक्शन भी होती है। तो डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट, कोर्ट हर एक एविडेंस को असेस करती है कि ये सब्सटैंटिव है, ये कोरॉबरेटिव है, ये कंक्लूसिव है, तो उसके बेस पे फिर कोर्ट को डिसाइड करना होता है। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रेलेवेंट एविडेंस है और क्या क्या फैक्ट इन इश्यूज में है, और सेक्शन 3 की क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, उसके बाद एक्सेप्शंस भी कुछ हैं क्या। तो उसमें जो आज का मेन टॉपिक था हमारा, उस पे हम 3 चीजों पे फोकस ज्यादा करेंगे। रेस जेस्टे, which is an exception to the rule of hearsay, and section जो मोटिव से डील करता है, और लास्ट सीन थ्योरी, या वो जो सेक्शन 106 था 109 है। 2 लास्ट सीन वर्ड जो है कभी कहीं भी एविडेंस एक्ट में यूज नहीं हुआ है,
बट उसको ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू हमने उसको एक वर्ड दे दिया लास्ट सेंचुरी कि इसका इंटरप्ले कि सेक्शन 6 और क्या डाइंग डिक्लेरेशन का कोई कनेक्शन है या फिर कॉन्डक्ट और उसका डिस्क्लोजर जो फॉलोड बाय रिकवरी जो सेक्शन 27 का है उसका कोई आपस में कनेक्शन है या लास्ट सीन का एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन कुछ एक फंडामेंटल जो रूल है ना वो एविडेंस के वही है। फर्स्ट है what facts may be used in evidence for deciding disputed facts. So I told you section 4 to 50 deals with the relevancy of facts. How are disputed facts to be proved? This is governed by the rules relating to hearsay and the best evidence rule. What weight is to be attached to the facts adduced as evidence? The court determines the probative value of the evidence produced. So, in short, हमेशा चलता है वो बेस्ट एविडेंस रूल. What is best evidence rule? For example, if it is oral testimony, तो उसमें आपका आई विटनेस अकाउंट इज द बेस्ट हियरसे एविडेंस नॉट एडमिसिबल. एंड आपका अगर डॉक्यूमेंट्स का है तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग रूल है प्राइमरी एविडेंस मींस ओरिजिनल एविडेंस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे, राइट? और in case you are entitled for secondary evidence, then you have to make out your case that your case fall in the category of secondary evidence. So these are the best rule of evidence. You have to give your best evidence before the court. It's not the, I always say that's not the quantity, it is the quality of the evidence. So let's discuss section 4 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam, Doctrine of Res Gestae. Earlier, it used to be section 6 of Indian Evidence Act. It says, section 4 states that facts which are not themselves in issue, but are so connected with the fact in issue to form part of the same transaction are relevant, irrespective of whether they occurred at the same time and place or at different times and place. So, ये section 6 और 4 आई मीन किस चीज से डील करता है? नॉर्मली तो रूल वही है कि relevant facts are admissible. This is slight exception. तो ये जो है उन facts को भी admissible कर लेता है provided few conditions are satisfied. First, spontaneous statement, contemporaneous act, immediate reaction surrounding circumstances, provided they form part of the same transaction. Doctrine of res gestae का जो एक तरह से इसको कह देते things done in the same transaction. I'll give you very simple example. For example, A is killing B or beating B with a stick and he makes a statement मार दिया या उसके पास में कोई bystander है वो उस शॉक को उस circumstances को देख के ही एक normal spontaneous reactions का utterance आती है कि A is killing B. So though he's not connected with the fact in issue and as per section 3 is nowhere, but क्योंकि उस bystander का वहां पे automatic reaction, there is no concoction, there is no time, and he's uttering these under the influence of the occurrence, then it held to be admissible and relevant. But essential ingredient क्या है? The prosecution must prove same transaction. We all know proximity in time, gap should not permit fabrication, immediate statement, and agar statement after several hours hai, then it is usually not admissible, then it falls in the category of hearsay. I'll give you again a very simple and
interesting example. For example, you are watching this, you are attending this session, and if you say that this is a good lecture or bad lecture or boring lecture, simultaneously, spontaneously, आपके reactions आ रहे हैं, then it is part of the same transaction, will be relevant and admissible as res gestae. But once this lecture is over, meeting is over, then you discuss few things about the lecture, then it won't be admissible or relevant. Right? So the acid test is basically spontaneity. It has to be spontaneous. अब इसके बारे में बहुत एक दो इंटरेस्टिंग से केस डिस्कस करेंगे जिसमें the statement or that utterance, the reaction was held relevant also and admissible and उस पे conviction भी हुई है. तो सबसे पहला केस है इसमें, इंटरेस्टिंग केस है, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट 768. मैं एंड में आपको सारा साइटेशन भी प्रोवाइड कर देंगी. इट्स अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया on the admissibility and evidentiary value of dying declaration and the doctrine of res gestae under the Indian Evidence Act. So, इसमें क्या था कि एक नेबर है, वो किसी के घर में जाता है, गन ले गए, और जो डिसीज्ड है वो उसको देख के उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, वो जस्ट सेज ही हैज कम विद द गन, राइट? एंड other family members are also there, they witness the occurrence and ultimately उसको गन से किल भी कर देता है, she died also. But what happened in the trial court? ट्रायल कोर्ट उसको एक्विट कर देती है कि बहुत सारे चीजें थी उसमें कि गन पे फिंगरप्रिंट्स नहीं थे एंड देयर आर अदर फैक्टर्स. आई जस्ट डोंट वांट टू कमेंट, बट द केस went up to the High Court. High Court reversed the acquittal and convicted him for murder. And Supreme Court upheld the High Court decision. इसमें जो key legal issues थे, the court considered that whether the victim's statement identifying her assailant was admissible as a dying declaration under Section 32, Part 1 of the Indian Evidence Act, whether the same statement was also admissible under Section 6 as part of the same transaction res gestae, whether such evidence, if reliable, could by itself sustain a conviction. Supreme Court held that statement made by victim identifying the assailant immediately before the death can qualify as a dying declaration. No doubt about that. Even if what I'm trying to say is, even if Section 32(1) was inapplicable due to various reasons, the statement could still be admissible under Section 6 because of its close connection with the crime. Evidence admitted under either provision is substantive evidence. If the court finds it truthful and reliable, it may form the basis of conviction even without independent corroboration. And the High Court was justified in reversing the acquittal because the trial court had improperly rejected credible prosecution evidence. So this case is regularly cited for two important principles. Okay, like there's an overlap between Section 6 and 32(1). Because a spontaneous statement made during or immediately connected with occurrence may be admissible both as res gestae and as a dying declaration. And as I told you earlier that हर एक evidence की एक value होती है, तो इसकी value जो है वो substantive है, then बहुत ज़्यादा corroboration इसके लिए नहीं चाहिए. A reliable dying declaration, if is not considered inherently weak evidence and can by itself support a conviction if the court is satisfied of its truthfulness. The best thing also about even if the person make a statement and लगता है कि उसकी death
हो जाएगी, but he or she is lucky enough to survive. What would be the evidentiary value of that statement? Then that case, that statement can be relevant and admissible under section 6. This is what I'm trying to say. There's another interesting case of Vijayvardhan Rao versus State of Andhra Pradesh. This is also frequently cited for its interpretation of Section 6 of Indian Evidence Act. The case also dealt with sentencing in a particularly brutal mass murder arising from a bus robbery and arson. So the lawyers who are dealing with murder reference cases in double bench must read this judgment also, because इस case में Supreme Court ने aggravating और mitigating circumstances को बहुत अच्छे से handle किया है. तो बेसिकली इसमें था कि 2 अक्यूज हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत ज्यादा एज नहीं है उनकी, पैसेंजर बस को रोकते हैं, रॉबरी करते हैं एंड डेलिबरेटली सेट द बस ऑन फायर. द फायर किल्ड 23 पैसेंजर्स, सीरियसली इंजर्ड several others. The trial court convicted the accused under multiple provisions, including murder, attempted murder, robbery, etc. The Supreme Court and imposed the death penalty also, which was affirmed by the High Court. The Supreme Court heard the appeal against both conviction and sentence. The key issue, principal evidentiary issue, was whether certain statement made by injured victim before the magistrate whose makers later survived could be admitted as res gestae under Section 6 of the Evidence Act after they cease to qualify as dying declaration under Section 32. Then the Supreme Court ruled out that, and the court explained that Section 6 is an exception to the general rule, excluding hearsay evidence, but only where the statement forms part of the same transaction because of its spontaneity and immediacy. So statement contemporaneous होना चाहिए event के साथ, immediately thereafter, so that there's no realistic opportunity for reflection of fabrication. Even a relatively short but appreciable interval may prevent a statement from qualifying as res gestae if the interval allows time for deliberation. So, however, though those statements were still capable of being used for corroboration under Section 57, but it was not, considered as Section 6 by the Honorable Court. So, importance of the decision. The judgment has become one of the Supreme Court's leading authorities on res gestae. Court regularly cited for proposition that spontaneity and continuity are essential requirement of Section 6, and the statement made after sufficient time has elapsed for possible fabrication fall outside the doctrine. So, despite excluding the disputed statement as res gestae, the Supreme Court found that the remaining evidence, including eyewitnesses, identification, and other material evidence, were sufficient to sustain the conviction. It upheld the death sentence, describing the crime as one of exceptional brutality involving the intentional burning of bus full of passenger after robbery. So, in nutshell, Section 6, again repeating, is an exception to the hearsay, but in order to be admissible, the test is spontaneity, and there is no time gap for the fabrication. So after that, I'm discussing the Section 6, which earlier in the Indian Evidence Act in Section 8 hota tha. It deals with motive, preparation and previous or subsequent conduct. हालांकि हम सभी जानते हैं जो भी क्रिमिनल लॉ से डील करते हैं कि क्राइम करने के लिए मोटिव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप भारतीय न्याय संहिता भी देखो या आईपीसी भी देखो, whosoever commits crime, लेकिन मोटिव कहीं भी उसमें वर्ड नहीं है. लेकिन अब जब हम केस डील करते हैं या कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, तो ब्रॉडर क्लासिफिकेशन हमारा होता है कि
ये आई विटनेस अकाउंट है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है इसमें। तो अब आई विटनेस अकाउंट में तो मोटिव है नहीं है, it really doesn't matter, but it acquires some sort of importance if the case is based on circumstantial evidence. So basically, motive sets up the background story by showing why a person may have committed or refrained from committing a particular act. It provides the foundation and context for understanding the conduct or circumstances surrounding the disputed fact. But in the absence of motive, आप ये नहीं कह सकते कि केस प्रूफ नहीं हुआ। उसमें जो ओनस प्रोसिक्यूशन के पास है या अगर रिवर्स बर्डन भी एक्यूज का है तो दोनों के पैरामीटर्स अलग अलग है। Prosecution का burden, we all know that the prosecution has to prove the case beyond all reasonable doubt, right? अगर आई विटनेस अकाउंट है और चीजों से केस प्रूव हो रहा है तो मोटिव हैज नो सिग्निफिकेंस, चाहे मोटिव था या मोटिव नहीं है। लेकिन अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है or then the prosecution has to, set the background story, some foundational context by raising this motive. Then, in the absence of direct evidence or witness testimony, motive helps establish the case to some extent and inference can be drawn. So motive is generally not sufficient by itself to prove guilt, but it strengthens the prosecution case when read along with the other evidence. So एक केस था उत्तर प्रदेश वर्सेस बाबूराम, AIR 2000. In a decision of Supreme Court of India concerning a triple homicide proved through circumstantial evidence, the court examined the standards for evaluating such evidence and reversed an acquittal by the Allahabad High Court, restoring the conviction of the accused. So, Supreme Court ने जो रीजनिंग दी, दैट हाई कोर्ट ने जो अप्रिशिएट नहीं किया cumulative effect of the circumstantial evidence. It emphasized that each circumstance should not be viewed in isolation. So, जो आपका circumstantial evidence का केस है, उसमें जो बेस्ट एविडेंस, जो बेस्ट केस लगता है ना मुझे, वो शरद बिरदी चंद शारदा का है वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट किया गया था एंड इनको हम पंचशील ऑफ प्रूफ भी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट में डिस्कस कर देती हूँ उसको, अदरवाइज सारे सब लॉयर्स को पता है कि जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस होता है तो हमें यही 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को ही प्रूफ करना होता है कोर्ट में। द सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच गिल्ट इज इन्फर्ड मस्ट बी फुल्ली एस्टैब्लिश्ड. The established fact must be consistent only with the hypothesis of the accused guilt. The circumstances must be conclusive in nature and tendency. They must exclude every reasonable hypothesis except the one sought to be proved. There must be a complete chain of evidence leaving no reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused, showing that in all human probability, the act was committed by the accused. So, circumstantial evidence में जब आप केस तैयार कर रहे हैं तो उसको सारी एविडेंस को आपने एक चेन की तरह बनाना है एंड एट टाइम्स जो हम निग्लेक्ट करते हैं ना कि ये तो जो स्केल साइड प्लान है उसको नहीं पढ़ेंगे, स्केल साइड प्लान बहुत हेल्प करती है एंड एट टाइम्स इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करी जो पुलिस ने करी होती है उसमें इतनी छोटी छोटी चीजें आपको मिल जाती हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब बात चल रही थी मोटिव की। मोटिव सिग्निफिकेंट है नहीं है लेकिन सर्कमस्टेंशियल केसेस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अब इसका इंटरप्ले क्या है दूसरे सेक्शन के साथ, सेक्शन 27 के साथ क्या है? Section 27 we know that
anything recovered which is in the exclusive knowledge of the accused, etc., etc. Now, due to any reason, अगर हम वो सेक्शन 27 की रिकवरी को प्रूव नहीं कर पाते, बहुत सारे रीजन है इसके, चाहे वो ओपन प्लेस से थी या डिस्टिंक्ट नॉलेज में नहीं थी, लेकिन वो सेक्शन 8 which is section 6 now showing the conduct of accused is very relevant and admissible. तो हमने रेस जेस्टे का कनेक्शन देखा डाइंग डिक्लेरेशन के साथ. इफ द इंजर्ड सर्वाइव then statement is admissible under section res gestae. अब मोटिव में हम उसको ले सकते हैं अगर 27 का हम के परव्यू से वो किसी भी तरह से बाहर निकल रहे हैं. तो अब हम इसके बाद सेक्शन 109 जो कि पहले 106 होता था, it says burden of proving facts especially within knowledge. लास्ट सीन थ्योरी, वैसे तो लास्ट सीन थ्योरी वर्ड नहीं यूज किया हुआ है, और लास्ट सीन थ्योरी के बारे में भी मैं आपको कई चीजें बता दूं कि जैसे ये लास्ट सीन थ्योरी बहुत ज्यादा यूज होता है कोर्ट में, बट लास्ट सीन थ्योरी डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. यूजुअली जो एक सेक्शन है, अब सेक्शन 119 हो गया, जो प्रिजम्पशन पे बेस्ड है कि the court may presume certain facts, basically which allow the court to draw a judicial presumption based on human conduct and natural events. So the doctrine is used in criminal cases where the accused and the deceased were last seen together in such circumstances that it becomes relevant to infer the possibility of the accused involvement in the offense. लेकिन लास्ट सीन है तो थोड़ा वीक टाइप एविडेंस, लेकिन आपको इसको कैसे यूज ब्रेक करना है, इसको इस प्रिजम्पशन को या रिवर्स बर्डन जो आपकी तरफ आ गया है पहले कि इट डज नॉट ऑपरेट इन आइसोलेशन, मीनिंग thereby it does not absolve the prosecution to discharge their initial burden of proving the case beyond reasonable doubt. So इसमें एक important case है सुनी देव महतो versus State of Bihar. A 3-judge bench of the Supreme Court clarified that the last seen theory cannot by itself form the sole basis for conviction. It is only one piece of circumstantial evidence, meaning thereby that if you are relying upon last seen theory, then 5 golden rules of circumstantial evidence punch shield proof should also be established by the prosecution. So for the burden of proof to shift or for an adverse inference to arise, the prosecution must independently establish a tight proximity-based prima facie case, showing that it was highly improbable for any person other than the accused to have intervened between the time the disease was last seen with the accused and the crime of and the time of death. So ये जो 109 है ये मोस्टली लास्ट सीन थ्योरी में तो आता ही, लेकिन यूजुअली उन सारे केसेस में ज्यादा आ जाता है जहाँ डाउरी डेथ है, कस्टोडियल डेथ है या मेट्रिमोनियल होम में डेथ हुई है, तो कोर्ट और जनरल एक क्वेरी आ जाती है कि ये how the death occurs within the vicinity of house. At least you should have to explain what transpired, what happened. Those facts are within your exclusive knowledge. But again, ये second step है. Prosecution का burden उतना ही obligatory है जितना और cases में होता है. But again, हाँ, अगर आप पर नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे तो एडवर्स इन्फ्लुएंस बाय द कोर्ट में बी ड्रॉन.
सो इसमें एक और केस है दीपक चंद्रकांत पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. Court held that if the witness who claims to have seen the accused and the deceased together fails to pass the test of credibility, or if there is an unexplained delay in recording the witness's statement, the last seen doctrine cannot be invoked as a shortcut. The prosecution cannot rely solely on the doctrine to bypass its core obligation of proving guilt beyond reasonable doubt. So, key principles क्या है फिर लास्ट सीन थ्योरी के, आपने फाइल में से क्या क्या निकालना है. So it cannot by itself lead to a conviction. इसके लिए स्ट्रॉन्ग और एक प्रोक्सीमेट लिंक होना चाहिए अक्यूज का जो लास्ट सीन उसको डिजीज के साथ देखा है, एंड ऑकरेंस ऑफ डेथ मस्ट बी independently established, and at the same time the credibility of the witness and prompt recording of the statement are crucial, and the prosecution must still prove the accused's guilt beyond reasonable doubt. For example, I was reading one case where the witness was also a complainant. He says ये उसको मार रहे थे, केरोसिन पोर किया, और उसके 12 दिन बाद जाके वो एफआईआर दर्ज करा. तो अगर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही थ्रैश हो जाती है, तो उसमें फिर लास्ट सीन थ्योरी अपने आप में एक तरह से बहुत वीक एविडेंस हो जाता है. तो प्रोसिक्यूशन का इनिशियल बर्डन. After that, there is only one scope that now the ball is in your court and you have to explain after that. So if you are not, you means accused is not able to explain those discharge that burden, then adverse inference can be drawn by the court. So again, थोड़ा सा और इसको elaborate करते हैं. What does it deal with? When a fact is specially within the knowledge of a person, the burden of proving that fact lies upon him. So, both जितने भी अपने custodial death के हैं, offences committed inside a house, उसमें ये बहुत applicable होता है. But it is a judge-made principle developed through case law and is generally applied along with Section 109, special knowledge, circumstantial evidence principle, and the prosecution's primary burden of proof. So, अगर accused or इसमें last scene together, this word is also very important. And उसके बाद जो time gap है between the circumstances and the death is so small that no third person's intervention is reasonably possible. The accused must offer an explanation. Failure to do so becomes an additional incriminating circumstance. But last scene alone is ordinarily insufficient for conviction. So, essentials of last scene theory, I'm again repeating, because in single bench appeal, double bench appeal, murder cases में last scene बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है कि हाँ रिवर्स बर्डन है, ये है, आपको प्रूफ करना है. सो आप उस तरह से अपने केस की तैयारी करेंगे कि पहले तो प्रोसिक्यूशन को देखेंगे कि उसने जो है प्रूफ किया कि नहीं प्रूफ किया. डिसीज वाज लास्ट सीन विद द अक्यूज, टाइम गैप इज वेरी स्मॉल, नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरवेंशन बाय अनदर पर्सन, रिकवरी और अदर corroboration exist, chain of circumstances is complete. So इसमें बहुत important case है बोधराज versus state of Jammu and Kashmir, is a leading decision of the Supreme Court of India on the law of circumstantial evidence and the last seen doctrine in criminal trial. The judgment is frequently cited for explaining when a conviction can safely rest on circumstantial evidence and the standard that such evidence must satisfy. इसमें जो है प्रोसिक्यूशन ने एलेज किया था कि बहुत सारे अक्यूज ने पार्टिसिपेट किया मर्डर में, एंड द ट्रायल कोर्ट ने कुछ अक्यूज को कन्विक्ट किया था, कुछ को एक्विट कर दिया. अपील में हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया और एक्विटेड अक्यूज को भी कन्विक्ट कर दिया, फाइंडिंग दैट
the cumulative circumstantial evidence establishes their guilt. Then the matter reached the Supreme Court, which examined whether the evidence form a complete and reliable chain pointing only to the guilt of the accused. Then again, this judgment is best known for restating several foundational principles. Circumstantial evidence may by itself sustain a conviction, but only if every incriminating circumstances is firmly established. The proved circumstances must be consistent only with the hypothesis of the accused guilt. The circumstances must form a complete chain. Court must evaluate the cumulative effect of all circumstances. So last seen theory is this doctrine significant only when the time gap between the accused and deceased and discovery of death is so small that the possibility of someone who committing the crime becomes highly improbable. So बार बार निकल के एक ही बात सामने आ रही है लास्ट सीन में या इवन फैक्ट विद इन अ स्पेशल नॉलेज में कि आपको पहले प्रोसिक्यूशन ही प्रूव करेगी और फिर जो उसमें प्रोसिक्यूशन के उसमें फ्लॉ देखना है टाइम गैप का रिकवरी का और वेदर द चेन इज एस्टैब्लिश्ड और नॉट. सो इन इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो कन्विक्शन को अपहेल्ड ही किया था एंड बोला था कि हाई कोर्ट ने बहुत करेक्टली अप्रिशिएटेड द क्यूमुलेटिव सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंक्लूडिंग द विटनेस टेस्टिमनी एंड रिकवरीज. सो नाउ I have explained briefly what is res gestae, how far motive or conduct is important, and the last thing also. But उसके अलावा भी एक आपको देखना होता है हर एक केस में कि cumulative effect क्या है, क्योंकि at times there is it's not possible that conclusive evidence is available. At time it is not. The substantive evidence is not available. So अगर आपका केस आपको लगता है कि it's an open and shut case, still you can find the evidence, चाहे वो inquest report है, चाहे वो आपका साइट प्लान है और रिकवरीज है और एट टाइम्स आपको वो थर्डाइन डिक्लेरेशन नहीं कि उसमें परव्यू में आ रहा तो आप उसको 6 में ले जाइए. आपका डिस्क्लोजर और रिकवरी है उसमें नहीं है तो आप इसको कंडक्ट में ले जा सकते हैं. और लास्ट सीन को कैसे थ्रेश करना है इसके बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस किए. तो अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि ट्रायल कोर्ट में कोई भी एविडेंस कराना या हाई कोर्ट में कोई भी टीवी अपील आपने करानी आर्ग्यू करनी है तो आपको मुश्किल आएगी. क्योंकि अगेन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जब हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है 161 के बयान हम कभी भी अपीलेट स्टेज पे नहीं पढ़ते अनलेस अंटिल हमने उनको by way of suggestion, by way of उनका attention drawn where it is recorded or not recorded बुक कराया है या नहीं. क्यों? क्योंकि statement given before the police or recorded by the police 161 के बयान होते हैं वो साइन नहीं होते हैं और वो अभी जब गवाही बन जाते हैं गवाही कैसे बनेगी स्टेटमेंट जो है वो गवाही कैसे बनती है वही जुडिशियल प्रोसीडिंग्स in or before the court where the magistrate or authorities are legally empowered to record the evidence on oath. So meaning thereby, first requirement is oath, second is cross examination और आपने देखा वो cross examination के बाद वो लिखाते हैं RANAC, read over and attested to be correct. So again अब वो स्टेटमेंट ही रहेगी अगर एग्जामिनेशन चीफ हो गया एंड क्रॉस डेफर हो गया और लगता है कि इसके बाद वर्क सस्पेंड हो गया या वो विटनेस की वो अवेलेबल नहीं है या वो उसकी डेथ हो जाती है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ तो तब भी हम उसको स्टेटमेंट ही बोलेंगे. हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि उसकी गवाही कंप्लीट होगी वो दैट कैन नॉट बी रीड एज एन एविडेंस. सो ये हुआ ओरल एविडेंस के रिगार्डिंग. या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी
एनेक्शर्स ही रहेंगे। जब वो कोर्ट में जुडिशियल फाइल का पार्ट कब बनते हैं, जब वो एडमिसिबिलिटी और रेलेवेंसी का और मोड ऑफ प्रूफ का ऑल टेस्ट क्लियर करके जब उस एनेक्शर को एग्जिबिट लगा देते हैं, देन इट बिकम्स एन एविडेंस। सो with this I conclude my session, but if there are questions, I think interactive हो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एविडेंस एक ऐसी चीज है जो बिना डिस्कशन के नहीं आ सकती, और कितना भी आप ट्रायल कर लो, कितनी डीबी अपील कर लो, हर बार आपको लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया इसमें। Practice makes the man perfect. यस एग्जैक्टली। एट टाइम्स लॉयर के लिए ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस ऑल्सो। Oh, then it is thinking on the feet you learn with the art of time. True. Yeah. One is, can every statement made after an incident be treated as a res gestae? Can every statement made after the incident be treated as a res gestae, and why? नहीं, इसमें हमने 2-3 बार बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक तो कि द स्टेटमेंट इज मेड अंडर द स्ट्रेस ऑफ द इवेंट एंड इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अभी जैसे आप एक सेशन अटेंड कर रहे हो, उस टाइम आप कुछ स्टेटमेंट दे रहे हो, देन इट इज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। वन द सेशन इज ओवर एंड देन सो वो टेस्ट आप अप्लाई करेंगे। Not all statements. Statements made under the impression of the principal event. वो कहते हैं हेयर से एविडेंस को हम जनरली इनएडमिसिबल क्यों मानते हैं? इसलिए कि उसने जो है कोर्ट के सामने जो है ना, उसने अगर वो, इसको मैं ऐसे ऐसे पुट करती हूँ, इसके लिए आपको अभी मैंने बताया था कि जो एविडेंस एक्ट है ये एक तरह से रूल्स, क्वालिफाइंग रूल्स बताता है कि भाई ये माना जाएगा, ये नहीं माना जाएगा। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर, अगर किसी जॉब में आप अप्लाई करते हो, उसमें कंडीशन है कि ओनली ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, और आप ग्रेजुएट नहीं हो, आप अप्लाई कर देते हो, तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो एविडेंस एक्ट के बारे में जो एक भ्रांति है ना कि भाई ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, इसमें लिख दिया है ये चीज रेलेवेंट होगी, ये रेलेवेंट नहीं होगी, ये एडमिसेबल होगी, ये एडमिसेबल नहीं होगी, तो एवरीबडी इज बाउंड। सो व्हाई नॉट एडमिसेबल, इसका जवाब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कह दिया। अगर कोई चीज, अब पुलिस के सामने कन्फेशन है, नहीं एडमिसेबल तो नहीं एडमिसेबल है, अब उन्होंने कह दिया कि डिजिटल एविडेंस एडमिसेबल होगी तो होगी। And one more section I forgot to discuss. If there is an improper admission of evidence, और ऐसा कोई फैक्ट आ जाता है जो इस एक्ट के तहत नहीं था, तो कोई भी नया ट्रायल नहीं होगा। लास्ट सेक्शन जो है इसका यही कहता है, 169 को भी पढ़ेंगे, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। Do you feel जो डिसीज का डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं can be considered as a res gestae? Yes, if he survives, or Dying declaration. then again, okay, अगर if he is dead and they said a dying declaration, but अगर उसमें dying declaration की बहुत सारी कंडीशन है कि उसको मेडिकली फिट होना है, फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंजरीज ऐसी नहीं हो, डाउटफुल नहीं हो, ट्रूथफुल हो, और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में भी लिखा है कि क्या क्या तरीके, अगर वो उसके परव्यू में नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो then it can always be treated as a res gestae because the statement is spontaneous. और दूसरा है कि जैसे कोई वकील को बयान, पुलिस को बयान दिया जाता है, तो उसको भी रेस जेस्टे की टर्म्स में लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा? पुलिस को जो बयान दिया जाता है डिपेंड करेगा कि उसने कौन सा बयान दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए इज बीटिंग समवन, और वो उसी समय पुलिस को जाके बोल देता है कि ए इज बीटिंग समवन, इंस्टेंट, टाइम गैप नहीं है, फैब्रिकेशन के लिए, कंकॉक्शन के लिए उसको, और अपनी मेमोरी को रिप्ले करने के लिए, देन
it is relevant and admissible. Last question लेंगे. What is the difference between वही जो पहले लिया res gestae and a dying declaration? वही रहेगा, प्रिंसिपल तो सेम ही अप्लाई करेगा कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन में ना कई बार बहुत इट्स वेरी टेक्निकल, इस पे ना आप एक अलग से सेशन लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इनटू हिज डेथ, तो उसमें बड़ा कभी कॉम्प्लिकेशंस ही आ जाती है. तो अब मैं ये कहती हूँ कि मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं कवर हो रहा किसी भी रीजन से, तो वो 6 में कवर हो सकता है. And there are situations where that statement fulfills the criteria of section 30T clause 1 or section 6 also. शुक्रिया, आपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आइडिया दे दिया कि डाइंग डिक्लेरेशन पे करेंगे. हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में तो बहुत लंबा सेशन हो सकता है. ठीक है जी. The people will continue to watch more webinars, not only from you but from other speakers. Do stay connected with us. Thank you. And tomorrow's session is this is Indian Jurisprudence in the Commonwealth. That is by Siddharth Sujoria. Do join us tomorrow at 6 p.m. Thank you, everyone.